हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टॉक्स डिस्कशन विद एसडी। मैं हूं एसडी शानंद दास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। Banking stocks are great for trading. They have volume, they have volatility, and they are very important for the economy. So overall, I keep a check on banking stocks for opportunities. I could not make this video. मैं काफी दिनों से banking stocks के ऊपर वीडियो नहीं बना पाया, but I think it's a good time to look at the banking stocks को एक बार देखना चाहिए। तो चलिए इस एनालॉजी के लिए मैं अपना फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप का इस्तेमाल करूंगा। बिफोर आई गो टू बैंकिंग स्टॉक्स, मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ब्रिंग द इंडिकेटर्स। I'll go to invite only SD Rainbow Wave V1. Under V1, I'll select Fountain of Gold. This is the Fountain of Gold and apply. And I'll need the SD RSI X as well. Regular, yes, apply. Adjust the chart. And now first I'm going to show you a bit of sector rotation. Sector rotation, I'm going to look at the PSU banks. एंड इन डेली चार्ट, अगर आप ये क्लास में मैं हाईलाइट किया था, दोज हु हैव बीन फॉलोइंग, दिस इज नॉट अ सरप्राइज कि पीएसयू बैंक हैज बीन आउट परफॉर्मिंग द ओवरऑल निफ्टी 500 फॉर क्वाइट सम डेज नाउ। हियर आई एम अप्लाइंग आज जो बैंक्स का स्टॉक्स, इसमें हम लोग टीएमपीवी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं, मोर लॉन्ग टर्म स्विंग स्ट्रेटेजी rather than short term swing, जिसके लिए हम लोग क्रीम डेला क्रीम या 125 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज करते हैं। क्रीम डेला क्रीम स्ट्रेटेजी along with 125 मिनट्स। बट करंटली जिस हिसाब से मैं देख रहा हूं बैंक्स को, दैट इज द टीएमपीवी स्ट्रेटेजी ऑफ माइंड, विच इज हम लोग बस वीकली एंड डेली चार्ट ही रेफर करते हैं। And I'll have to change the fountain of gold now to cash stocks weekly to effectively make sure I'm selecting the right stocks. First, I'll look at alphabetically the private bank and I'll look at via the weekly chart, because first selection जो आता है that is via the weekly chart, and weekly chart में भी दिख रहा है PSU bank में we got a buy signal. So coming days PSU bank can be good. So let's look at कि कौन सा banks are in a good positions. फर्स्ट देख रहे हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉट एट ऑल रेडी विद द रेड कैंडल, विल अवॉइड AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक्सिस बैंक इज नेक्स्ट with the red candle, score bad, will avoid Axis Bank. Bandhan Bank is same, bad. Currently we see the green caps, mean in daily chart you may see some bounce back, but it is not ready for some long swings. CSB Bank not ready. Then हम लोग देख रहे हैं सिटी यूनियन बैंक, दिस इज रिलेटिवली डिफरेंट। सिटी यूनियन बैंक इज trying to move higher. It has cleared as an important area. However, the white cross is outside the candle body, so we can go for this one. The strength score is still not there. Unless the score satisfy हो रहा है यहाँ पे, we'll only prefer to do smaller quantities. सो सिटी यूनियन बैंक के ऊपर हम लोग नजर डेफिनेटली रख सकते हैं। दिस इज डीसीबी बैंक इज नेक्स्ट। वी डोंट हैव इवन अ बाय सिग्नल इन द वीकली चार्ट। सम बाउंस बैक जो डेली चार्ट में जरूर दिख जाएगा। वी कैन सी द बाउंस बैक इन द डेली, बट it can go bigger later on as it breaks through this area and clears the resistance around 130. It can go big, but currently it is not ready. Then we have Dhanalakshmi Bank, RSI structure. Before even chart comes, it is clearing up. Dhanalakshmi Bank is not ready for any kind of in-swing investment thinking with the TMPV strategy. Same for Equitas Small Finance, will avoid. The one that is becoming interesting is the Federal Reserve Bank. We got a buy signal. This is a weekly, that means weekly closing important होगा. So next week we can see further rise. अगर इस week का जो high होगा, it is broken, then we are likely to see some bigger rise in Federal Bank. So कौन सा बैंक और एक बार हम लोग कलर कर लेते हैं। सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक,
This one is not going well. This is the Fino Payments Bank. Once again failed to make a breakout, which increases risk की bigger decline होगा. HDFC Bank struggling to give the required breakout. वहीं पे है. Probably with earnings it will go up. एक important base के पास है, that is 1567. एक range में बैठा है, possibly waiting for the push from the earnings or something, but it's not there yet. It's continuously in a range. Once this range breaks out, जब ये range का breakout होगा around 1780, 1800, then the stock would be ready to challenge 2000 level. ICICI Bank is another stock which could have gone well, but it is taking time. और ये time लेगा, it will make us panic. बट इसका स्ट्रक्चर इन डेली चार्ट जो है बहुत ही बढ़िया है. इट इज बेस है यहां पे, साथ में एम्प्टी लाइन आ रहा है, सो फॉल्स डाउन मूव देके देन इट कैन गो हायर. सो आईसीआईसीआई बैंक इनिशियली बाइंग से आई थिंक अबव 1325 जब ये सस्टेन करेगा, दैट विल बी अ गुड डिसीजन टू बाय ओवर देयर. द लेटेस्ट कमबैक जो था वीकली चार्ट से क्लियरली दिख रहा है कि इट हैज फेल्ड. सो आईसीआईसीआई बैंक में हम लोग कोई भी बड़ा पोजीशन मेंटेन नहीं करेंगे, ओनली ट्रैकर काइंड ऑफ, ताकि क्या चल रहा है अंडरलाइन विद दिस लेवल्स एक काइंड ऑफ क्लियर रहे. नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट आईडीबीआई बैंक वीकली चार्ट. अ कमबैक कैन बी सीन, बट इट इज मोर ऑफ अ डेली चार्ट बेस्ड कमबैक. वीकली वी डोंट हैव द बाय सिग्नल येट. Then we are going for IDFC First Bank. It's bearish, bad, not so great right now. Next, we are looking at IndusInd Bank. Weekly chart, very bad. Will not prefer IndusInd Bank right now. Jammu and Kashmir Bank is coming up, but important levels से मे बी डेली चार्ट में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखे, ब्रेकआउट्स दिखे, कुछ एरियाज का जो दिख रहा है इन द डेली चार्ट के. वी आर सीइंग अ कमबैक, बट बहुत सारे रेजिस्टेंस है. फ्लैट जो एरियाज है ये मेरे इसमें रेजिस्टेंसेस है. सो आई विल वेट फॉर अ वीकली बाय सिग्नल फर्स्ट. वी कैन प्लेस दैट की रेनबो बाय क्रिएट. वंस द बाय सिग्नल जब आएगा हमें पता चल जाएगा. देन वी हैव करूर वैसा बैंक. इसमें आज अलर्ट आया है मेरा करूर वैसा बैंक में कि इट इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर. दिस इज द वन करूर वैसा बैंक. 9:37 में 9:37 पे ये आया था अलर्ट. करूर वैसा बैंक इज अटेम्प्टिंग अ ब्रेकआउट. हाउएवर एक चीज मैं नोटिस करने के लिए बोलूंगा, दैट इज द स्पीड. स्पीड इज लो. ऑल्सो व्हाइट क्रॉस जो है मिनिमम स्टॉप लॉस कैंडल बॉडी के आउटसाइड है, तो हमें केयरफुली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. अनलेस द स्ट्रेंथ स्कोर बिकमिंग 10 जो हमें मिनिमम क्राइटेरिया, विल नॉट गो टू मच इनटू दिस स्टॉक येट. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक. इट इज नॉट रेडी. वीकली चार्ट स्टिल बियरिश. I have highlighted a breakout दे रहा है, बट हम लोग वेट करेंगे. Thankfully we waited and it did not go very well. It is not right now in a good area of investment. Same for Karnataka Bank. It is still in that range. Range needs to break for Karnataka Bank to become good. We are looking at RBL Bank, very, very bad, red colored clearly. Then looking at South Indian Bank, एक बेस बनाने की कोशिश दिख रहा है यहां पे आरएसआई का स्ट्रक्चर से. डेली चार्ट में आपको बाइंग दिखेगा, बट इज इट गुड फॉर वीकली बाइंग? देख के टीएमपीवी स्विंग, नो, इट्स नॉट रेडी. वी डोंट वांट टू गो फॉर बॉटम हंटिंग, वी वांट टू गो फॉर सेफ बाइंग. सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे स्टॉक्स के लिए साउथ इंडियन बैंक. सो विल वेट फर्दर अनलेस वी गिव बेटर सिग्नल्स. सेम दिख रहा है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक डाउन. वी आर लुकिंग एट तमिलनाडु मर्का बैंक डाउन, नॉट ग्रेट. वी आर लुकिंग एट उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो भी खराब, नॉट ग्रेट. टुडे बाउंस बैक बट नॉट गुड. इट कैन बी अ ट्रैप. येस बैंक टुडे बाउंस बैक,
but this can be a trap. So largely मुझे private sector में City Union Bank and Federal Bank, these are looking strong. Along with, we can keep a check Karur Vaisa, what's happening with ICICI, what's happening with HDFC. They are still in a range, could give breakout in the coming weeks. PSU Bank में हम लोग देख रहे हैं, this chart is interesting. Bank of Baroda is giving a buy signal this week. With buy कल होगा weekly close. If buy signal remains till the closing, that means it's a valid one. तो हम लोग इसके साथ कुछ position कर सकते हैं and wait for this strength score, speed score to satisfy, then go for bigger quantity. एंड उसके लिए भी हम लोग अलर्ट प्लेस कर सकते हैं कि इसमें बताओ कि कब जाके स्ट्रेंथ स्कोर ग्रेटर देन 70, इट विल द सिस्टम विल अलर्ट यू. देन वी आर लुकिंग एट बैंक ऑफ इंडिया, बाउंस बैक्स बट नोवेयर क्लोज टू बीइंग बाइंग. कनाडा बैंक सेम. देन वी आर लुकिंग एट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. आरएसआई स्ट्रक्चर से दिख रहा है जस्ट बेस बिल्डिंग चल रहा है, जस्ट इनिशियल बाउंस बैक, but this stock is far away from ready to buy. Indian Bank, Bank of Baroda को mark कर लिया. Indian Bank is jumping up. Let's look at this is once again trying to jump back. We have got a buy signal. My preference will be to buy above this, the 615 onto this stock. And we'll have to wait for the candle to close in tomorrow. Since this is weekly candle, weekly close is very, very important. Then we are looking at Indian Overseas Bank. I think a fallout was suddenly internet में dropping. Yeah, it is back. Indian Overseas Bank bouncing back, not ready. Same we can say for Bank of Maharashtra, just a bounce back, not ready for good buying. Same we can say for Punjab Bank, bounce back जो आपको डेली में दिख जाएगा, but is it good for good buying, safe buying? No, नहीं है. Then we are looking at Punjab and Sindh Bank, similar story. Bounce back, important level say, is it safe to buy yet? No, it's not safe. It can remain in a consolidation phase. The one that is interesting is State Bank of India. Here this week we are getting a buy signal. We can do some quantity if weekly close पे signal है, and then wait for the scores to satisfy, because unless ये score satisfy हो रहा है, strength score 70, speed 10, हम लोग कुछ भी बड़ा quantity करने का नहीं. At least मैं, I don't say you have to trade based on me. I will not think of any big quantity. UCO Bank bouncing back, not ready. Union Bank bouncing back from very important level, but is it safe to buy yet? No, it's not yet safe to go for buying. So overall, this is the picture from the banks. I hope this discussion this is a more technical discussion. I hope it was helpful to you. Agar helpful, don't forget to put a thumbs up. All the best from my side, as well as happy trading.